हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुतिका टेक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर यूजिंग रिकर्शन। ये रिकर्शन के थ्रू प्रोग्रामिंग है, बट एक सिंपल प्राइम नंबर का प्रोग्राम जिसमें रिकर्शन यूज़ नहीं हुई है, वो भी मैंने आपको पहले बता रखा है पुरानी वीडियोस में। आप वो जाके चेक कर सकते हैं, या उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पर आज हम देखेंगे हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर यूजिंग रिकर्शन। ये एक प्रोग्राम है जिसको हम प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं बाय रिकर्शन। ये प्रोग्राम वैसे मैंने एक जावा लैंग्वेज में लिखा है, पर आप इसी कॉन्सेप्ट को किसी और लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, जैसे C++, पाइथन, आप सिंटेक्स अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए, और प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करूँगी, मैं आपको इसको प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगी कि कैसे इसका लॉजिक रन होता है। मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने पुराने वाले क्वेश्चन में भी 5 लिया था, तो यहाँ भी 5 ले लेती हूँ एज इनपुट। सो आई वुड से आई हैव n is equals to 5. Okay, and we have declared and initialized d is equals to 2. जैसे अभी मैंने बोला इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर्ड। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी किसी वीडियो के फॉर्मेट में। ओके, हम प्रोग्राम में एंटर करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ डी इक्वल इक्वल एन, सॉरी, डी इक्वल इक्वल नम। विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 इक्वल इक्वल 5, विच इज़ नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग. Then we come to the else if part. It says 5 mod 2. What does mod gives? Mod gives the remainder. So it says 5 mod 2 equal 0. No, because the remainder will be 1, which is not equal to 0. So now we come to the else part. In the else part, it says increment d by 1. D is equals to d by 1. So I'll increment d by 1 and d becomes 3. Now it says return prime num. So it goes back to the same function, prime num. So num is 5. Now we check if d equal num. No, d is 3 and num is 5. So it comes to the else if part. If num mod d, that is 5 mod 3 equal 0. No, it is not equal to 0. 5 mod 3 is equals to 2. Okay, 2 is the remainder. Now we come to the else part. We increment d by 1, d becomes 4. Okay. Now it says return prime num. So we go back to the function. We're going again go back over here. It says if d equal num, no, d is 4 and num is 5. Else if num mod d, num is 5 mod d mod 4, which is equals to 1. Which is equal to 1, and so this statement is not true. This is not true. So now we come to the else part. Now d becomes 5. Now we check again. We go back to the function. We say d equal num. Now d is 5, num is 5, so it becomes true. So now we are returning 1. To return 1 over here, it means it is prime. Okay, and to return 0, it means it is not prime. Okay, now these two functions, the else and if else, work as a base case. Okay, and this is the recursive case.
ओके, अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये कंडीशन ट्रू होता, ठीक है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता. सो लेट्स टेक एग्जांपल एज 4. ओके, सो आई एम टेकिंग num इक्वल टू 4. सो अब हम यहाँ पे एंटर करते, डी हमारे पास कितना है, 2 है. इनिशियली डी 2 है. we says we say if d equal n. No, this is false. Now it comes to the else if part. Now we check 4 mod 2 is equal to 0. Yes, it is equal to 0. Why? Because 2, when it divides 4, it gives us 0 as a remainder. So this condition becomes true over here and it returns 0. And so it is not prime, and we all know that 4 is not a prime and 5 is prime. Okay, so I hope this was clear. You can let me know in the comment section if you have any doubts. And अभी हम रिकर्शन के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं. हमने कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर भी लिए. आई थिंक 2 प्रोग्राम्स हमने पहले कर लिए हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन रिकर्शन के ऊपर सॉल्व करना है, कोई भी प्रोग्राम, तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं उसके ऊपर भी रिकर्शन का प्रोग्राम बना दूंगी. ओके, I hope this helps you and have a good day.